Hello everyone, good morning. I'm Rakhi Nandal, your maths teacher. Today I'm going to teach you our chapter number 4, that is quadratic equation. Before that, I hope all of you are doing well and doing your homework regularly along with your classes going on. So today I'm going to start our chapter number 4, that is quadratic equation. As you are familiar, we have done our 3 previous chapters and I hope you have done in your notebooks respectively. So let's start with your introduction part, quadratic equations. So all of you might be familiar with the word quadratic, but we will take a quick review about that. Polynomials we have studied in class 9. So polynomials of degree 2 is known as quadratic polynomial. All of us have studied. जो पोलिनोमियल जिनमें डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड व्हेन द वर्ड इक्वेशन एंटर्स इट मीन्स व्हेन वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स टू 0 इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. For example, ax square plus bx plus c. This is before that it was simply a quadratic polynomial, and the moment when 0 is entered it has become an equation. This is your standard form of quadratic equation. Equal to 0 is necessary for polynomial to be an equation. Where a, b, c are real numbers. Real number can be of any form. It can be positive, negative or fraction. But here one condition is that a should not be equal to 0. It means if a will become 0, it means x square will become 0, and if this whole term will become 0, the degree would have been 1. Then how we can say it quadratic? So it's mandatory that a should not be equal to 0, means the coefficient of x square a, it should not be equal to 0. Other examples are x square minus 3x plus 4 is equal to 0. Here look, this is the order they have changed. You can rearrange it in this particular order to make it more symmetric. That first higher order we usually write and then the lesser order. Here x square minus x is equal. Look, I told you a cannot be equal to 0. b and c can be 0 because 0 also comes under your real numbers. So x square minus 4 is equal. Yes, it is a polynomial because a is not 0. b can be 0. If b is 0, it means x term will got eliminated. ये term आपका यहाँ से eliminate हो जाएगा. So x square minus 4 is equal to 0. So this is the basic introduction. You are familiar with quadratic polynomial, so not a big deal to transform it in the form of equation. So today what kind of question we will ask you? How to form quadratic equation from given statement or situation. How it is useful in our daily manners, especially in business world or especially in practical problems. How we transform these problems into mathematical expression, that is our equations. So today we will transform your problem into quadratic equation. Mathematically I am transforming it. Here just have a look at the statement. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Means he is saying जो आपका cost है, production हो रहा है आपके पास toys का, एक toy का cost कितना है 55 minus जितने toys बन रहे हैं. Okay, 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. On a particular day, the cost was found to be 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. आपको बताना है उस पर्टिकुलर दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज बने थे जब टोटल कॉस्ट आया था आपके पास 750 रुपीज़, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस उस दिन जितने टॉयज बने हैं उतना. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस? जस्ट हैव अ लुक. वी विल अज्यूम अ वेरिएबल एक्स which has to be find out. जो भी आपको निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना था on production the total number of toys produced on that day. तो हम क्या करेंगे, जो भी निकालना हो we will assume it in the form of variable. आप x ले सकते हैं, p ले सकते हैं, any
वेरिएबल यू लाइक इट, बट यूजुअली वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स. वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म वी कंसिडर इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स. So we have to find the total number of toys produced. So let x be the number of produced on that day. हमने assume कर लिया है the number of toys produced on that day was x. अब number of toys x है, तो cost of production of each toy, एक toy का cost क्या बताया था आपको, 55 minus number of toys produced on that day, that is x. It means cost has become as 55 minus x. Now total cost of production कैसे निकालते हो आप, number of toys into cost of one toy. एक toy की cost है आपके पास, number of toys आपने x consider कर लिया है, so total cost कितना बना, number of toys x into cost of one toy, 55 minus x. This term is in your rupees. cost है तो ये rupees में है आपके पास, x into 50. Now condition क्या थी आपके पास, that the total cost found was 750 rupees. तो अब देखो total cost आपने mathematical form में ये निकाला है, given कितना है 750. So we can put them together, x into 55 minus x is equal to 750. You know when there is no sign it is considered as multiplication. So initially आपने ऐसे सीखा था, but now we will directly use this kind of format. कुछ भी नहीं है, it means multiplication है यहाँ पे. is equal to 750 it was given, multiply किया x को, 55x minus x square is equal to 750. all of you have done in your 8th class or 9th class. now I would have rearranged it, rearrange किया मैंने दोनों terms को उधर, because I want to write it in a symmetrical manner. x square को आगे लिए इधर लेके गए, x square इधर भी convert हो गया sign. It means here it's a mistake has been done. It would be plus 750 because I didn't move 750. I have moved these two beyond equality. Okay, which is your mathematical representation of this problem. So the number of toys that satisfy this equation will be your number of toys produced on that day. We have taught you in class 9 also, in the chapter polynomial also. Degree is 2, it means 2 zeros will be there, 2 answers will be there. x की 2 वैल्यू होंगी आपके पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और वही 2 वैल्यू में से वैल्यूज क्या होंगी आपकी, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन that day. That we will learn tomorrow about that, but today we have learned how to form your mathematical equation, mathematical representation, we said it. Another type of question you will face it, check whether the following are quadratic equations or not. एक आपको format दिया हुआ है, you need to check whether is this quadratic equation or not. क्या करेंगे आप, simplify it, x multiply हो जाएगा अंदर आपके पास x square plus x प्लस 8, इधर x को एक बार पूरी टर्म के साथ, देन प्लस 2 पूरी टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इधर x मल्टीप्लाई हो गया अंदर, एक्स स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस 2x, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, कैंसिल आउट हो गया. आपने क्या किया, रीअरेंजिंग किया, ऑल ऑफ योर टर्म्स हैज़ बीन शिफ्टेड टू सिंगल साइड. इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ. यू हैव डन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट अर्लियर ऑल्सो. आई हैव मूव्ड RHS टू LHS, इसको यहाँ से मैंने यहाँ, एंड यू नो व्हेन एनी टर्म मूव बियॉन्ड इक्वालिटी द साइन गेट चेंज्ड. एक्स स्क्वायर वुड हैव टर्न इनटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 वुड हैव टर्न टू प्लस 4. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया विद बीइंग नेगेटिव साइन. नाउ इट इज लेफ्ट x प्लस 12 विच इज नॉट क्वाड्रेटिक. वाई, कैसे चेक करना है आपको क्वाड्रेटिक है या नहीं है, कंपेयर किससे करना है आपको, चेक इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. ए जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए ही तो जीरो हो गया आपके पास, बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म इज नॉट देयर, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक. अनदर फॉर्मेट, एक्स प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. आई वुड हैव एक्सपेंडेड इट. एक्सपेंडेशन आपको आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वही किया है, x as a, 2 as b. I have expanded it, x cube 2 cube plus 3x into 2 into x plus 2 whole is equal to x cube minus 4. X cube plus 8, 6x into x plus 2, x cube minus 4. Now again I would have opened this. Simplification is you need to remove all the brackets and you need to make it in the simple form, x square plus bx plus c.
6x को मल्टीप्लाई किया अंदर. नाउ अगेन रीअरेंजिंग सारी टर्म्स को, एक्स क्यूब माइनस 4 को आई वुड हैव शिफ्टेड, इधर शिफ्ट कर दिया है. एक्स क्यूब वुड हैव टर्न इनटू माइनस एक्स क्यूब, माइनस 4 वुड हैव टर्न इनटू प्लस 4. कैंसिल हो गया एक्स क्यूब, आपके पास बचा है ये विच इज़ योर क्वाड्रेटिक. कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया. सो यू विल चेक बाय सिंप्लीफाइंग. यू वर गिवन, आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिक्वायरमेंट हो सकता है आपके पास. वट एवर काइंड ऑफ फॉर्मेशन विल बी गिवन, आप उसे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे एंड चेक करेंगे इस फॉर्मेट के साथ. देखो, दिस इज नेसेसरी, दिस टर्म कैन बी स्किप बिकॉज बी एंड सी बोथ कैन बी जीरो बट ए कैन नॉट बी जीरो. कीपिंग दिस थिंग in mind, you will do your exercise 4.1 where either you have to represent your statement in the form of mathematical equation or you need to check whether given equation is quadratic or not. Only these two kind of questions are there. You will do exercise. If any doubt is there, you can message me. That's all for today. We will do slowly, but we will do each and every question of your NCERT. Right now we are focusing on your NCERT. So do exercise 4.1. Any doubt is there, feel free to ask. That's all for today. Thank you students. Have a good day.